Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Surah Al Qamar. Inshallah, in this session, we are going to learn about its information and explanation. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Surah Al Qamar has total of 55 ayat and it was revealed in Makkah. The surah takes its name from the very first verse, one shaqq Al Qamar, thereby implying that it is a surah in which the word Al Qamar has occurred, period of revelation. The incident of the shaqq Al Qamar, splitting of the moon, that has been mentioned in it determines its period of revelation precisely. The traditionists and commentators are agreed that this incident took place at Mina in Makkah about 5 years before the Holy Prophet's hijrah to Medina. Theme and subject matter. In this surah, the disbelievers of Makkah have been warned for their stubbornness, which they had adopted against the invitation of the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him. The amazing and wonderful phenomena of the splitting of moon was a manifest sign of the truth that the resurrection of which the Holy Prophet was giving them the news could take place and that it had approached near at hand. The great sphere of the moon had split into two distinct parts in which there were in front of their very eyes. The two parts had separated and receded so much apart from each other that to the onlookers one part had appeared on one side of the mountain and the other on the other side of it. Then in an instant the two had rejoined. This was a manifest proof of the truth that the system of the universe was neither eternal nor immortal. It could be disrupted. Huge stars and planets could split asunder, disintegrate, collide with each other, and everything that had been depicted in the Quran in connection with the description of the details of resurrection could happen. Not only this, it was also a portent that the disintegration of the system of the universe had begun and the time was near when resurrection would take place. The Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, invited the people's attention to this event only with this object in view and asked them to make it, to mark it and be witness to it. But the disbelievers described it as a magical illusion and persisted in their denial. For this stubbornness, they have been reproached in this surah. At the outset, it has been said, the people neither believe in the admonition, nor learn a lesson from history, nor affirm faith after witnessing manifest signs with their eyes. Now they would believe only when resurrection had taken place, and they would be rushing out of their graves towards the summoners on that day. Then the stories of the people of Noah and of Ad and Samud and of the people of Lut and Pharaoh have been related briefly, and they have been reminded of the terrible punishments that these nations suffered when they belied and disregarded the warnings given by the prophets of God. After the narration of each story, the refrain that has been provided is, this Quran is an easy means of admonition, which if a nation takes to heart and thereby takes the right way, the torment that descended on the former nations could be avoided. But it would indeed be a folly if, instead of heeding the admonition through this easy means, one persisted in the heedless and disbelieved until one was overtaken by the torment itself. Likewise, after citing admonitory precedents
from the history of the former nations, the disbelievers of Makkah have been addressed and warned to this effect. If you too adopt the same attitude and conduct for which the other nations have already been punished, why will you not be punished for it? Are you in any way a superior people that you should be treated differently from others? Or have you received a deed of amnesty that you will not be punished for the crime for which others have been punished? And if you feel elated at your great number, you will soon see that these very numbers of yours are put to rout on the battlefield. And on the day of the resurrection, you will be dealt with even more severely. In the end, the disbelievers have been told that Allah does not need to make lengthy preparations to bring about resurrection. No sooner does He give a simple command for it, then it will take place immediately. Like everything else, the universe and mankind also have a destiny. According to this destiny, everything happens at its own appointed time. It cannot be so. It cannot be so that whenever somebody gives a challenge, resurrection is brought about in order to convince him. If you adopt rebellion because you do not see it coming, you will only be adding to your own distress and misfortune. For your record, which is being prepared by divine agents, has not left any misdeed of yours, great or small, unrecorded. ख़वातीन हज़रात, अब सूरह अल कमर की मालूमात और तशरीहात का उर्दू तर्जुमा। सूरह अल कमर की 55 आयत हैं और ये मक्का में नाजिल हुई। इसका नाम पहली ही आयत के फिक्रे वशक्कल कमर से माखूज है। मतलब यह है कि वो सूरा जिसमें लफ्ज़ अल कमर आया है, ज़माना नज़ूल, इसमें शक्कुल कमर के वाक़या का जिक्र आया है, जिससे इसका ज़माना नज़ूल मुतय्यन हो जाता है। मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन का इस पर इत्तिफाक है कि ये वाक़या हिजरत से तकरीबन 5 साल पहले मक्का मुअज़्ज़मा में मिना के मकाम पर पेश आया था। मौजू और मज़मून, इसमें कुफ़ार मक्का को इस हठ धर्मी पर मुतनब्बे किया गया है जो उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मुकाबले में इख्तियार कर रखी थी। शक्कुल कमर का हैरत अंगेज़ वाक़या इस बात का सही निशान था कि वो क़यामत जिसके आने की खबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे थे फिल वाक़े बर्पा हो सकती है और इसकी आमद का वक्त करीब आ लगा है। चांद जैसा अजीम शान कुर्रा उनकी आंखों के सामने फटा था। इसके दोनों टुकड़े अलग अलग एक दूसरे से इतने दूर चले गए थे कि देखने वालों को एक टुकड़ा पहाड़ के एक तरफ और दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ नजर आया था। फिर आन की आन में वो दोनों फिर मिल गए थे। ये इस बात का खुला सबूत था कि निज़ाम आलम अज़ली और अब्दी और गैर फ़ानी नहीं है, वो दरहम बरहम हो सकता है। बड़े बड़े सितारे और सैयारे फूट सकते हैं, बिखर सकते हैं, एक दूसरे से टकरा सकते हैं, और वो सब कुछ हो सकता है जिसका नक्शा क़यामत की तफसीलात बयान करते हुए कुरान में खींचा गया है। यही नहीं बल्कि ये इस अमर का पता भी दे रहा था कि निज़ाम आलम के दरहम बरहम होने का आगाज़ हो गया है और वो वक्त करीब है जब क़यामत बर्पा होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हैसियत से लोगों को उस वाक़या की तरफ तवज्जो दिलाई और फरमाया, देखो और गवाह रहो, मगर कुफ़ार ने उसे जादू का करिश्मा करार दिया और अपने इनकार पर जमे रहे। इसी हट धर्मी पर इस सूरा में उन्हें मलामत की गई है। कलाम का आगाज करते हुए फरमाया गया कि ये लोग न समझाने से मानते हैं, अब ये उसी वक्त मानेंगे जब क़यामत फिल वाक़े बर्पा हो जाएगी और कब्रों से निकलकर ये दार महशर की तरफ दौड़े जा रहे होंगे। और उसके बाद उनके सामने कौम नूह, आद, कौम लूत और आले फ़िरौन का हाल मुख्तसर अल्फाज में बयान करके बताया गया है। खुदा के भेजे हुए रसूलों की तंबीहात को जुटलाकर ये कौमें किस दर्दनाक अजाब से दुचार हुई। और एक एक कौम का किस्सा बयान करने के बाद बार बार ये बात दोहराई गई है कि ये कुरान नसीहत का आसान जरिया है, जिससे अगर कोई कौम सबक लेकर राह रास्त पर आ जाए तो इन अजाबों की नौबत नहीं आ सकती जो इन कौमों पर नाजिल हुए। अब आखिर ये क्या हमाकत है कि इस आसान जरिए से नसीहत कबूल करने की बजाय कोई उसी पर इसरार करे कि अजाब देखे बगैर ना मानेगा।
اس طرح پچھلی قوموں کی تاریخ سے عبرتناک مثالیں دینے کے بعد کفار مکہ کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ جس طرز عمل پر دوسری قومیں سزا پا چکی ہیں وہی طرز عمل اگر تم اختیار کرو تو آخر تم کیوں نہ سزا پاؤ گے؟ کیا تمہارے کچھ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ تمہارے ساتھ دوسروں سے مختلف معاملہ کیا جائے، یا کوئی خاص معافی نامہ تمہارے پاس لکھا ہوا آ گیا ہے کہ جس جرم پر دو دوسرے پکڑے گئے ہیں وہی تم کرو گے تو تمہیں نہ پکڑا جائے گا؟ اور اگر تم اپنی جمعیت پر پھولے ہوئے ہو تو عنقریب تمہاری یہ جمعیت شکست کھا کر بھاگتی نظر آئے گی، اور اس سے زیادہ سخت معاملہ تمہارے ساتھ قیامت کے روز ہوگا۔ آخر میں کفار کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت لانے کے لیے کسی بڑی تیاری کی حاجت نہیں ہے، اس کا بس ایک حکم ہوتے ہی پلک جھپکاتے وہ برپا ہو جائے گی۔ مگر ہر چیز کی طرح نظام عالم اور نوع انسانی کی بھی ایک تقدیر ہے، اس تقدیر کے لحاظ سے جو وقت اس کام کے لیے مقرر ہے اسی وقت پر وہ ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب کوئی چیلنج کرے اس کو قائل کرنے کے لیے قیامت لا کھڑی کی جائے، اس کو آتے نہ دیکھ کر تم سرکشی اختیار کرو گے تو اپنی شامت اعمال کا نتیجہ بھگتو گے۔ تمہارا کچا چٹھا خدا کے ہاں تیار ہو رہا ہے جس میں تمہاری کوئی چھوٹی یا بڑی حرکت ثبت ہونے سے نہیں رہ گئی ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ سورہ القمر کی معلومات و تشریحات ختم ہوتی ہیں۔ ہم سب کو مل کر پوری ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دست بغدعا ہونا چاہیے کہ وہ پاک ذات ہمیں خالص نیت و مقصدیت عطا کرے کہ ہم قرآن پاک کے احکامات، سیرت النبی، احادیث اور سنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیکھیں، اور پھر ہمیں وہ وزڈم، دانشمندی، جرت اور حوصلہ عطا کرے کہ ہم اس پاک علم کو دوسروں تک پہنچائیں اور تمام معاشروں پہ، ملکوں پہ اور پوری دنیا پہ من و ان 100% نافذ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں وہ سب کچھ عطا کرے جو ہم سب کے لیے سب سے بہتر ہے۔ خواتین و حضرات، اپنے اہل و عیال اور اپنے پورے ماحول کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی نشست تک اللہ حافظ۔